up in the greenhouse, ball it up. Hi guys, welcome back to the new video. आज हम लोग आए हैं, as you can see behind me, Karachi Pizza and Bismillah Sweets. So this is my favorite strip mall in Mississauga. इसमें Silver Spoon भी है. Silver Spoon की हम पूरी एक series separately करेंगे, तो that's why I'm not doing it today. This is the right now the best desi pizza you can find in the whole Toronto. Karachi Pizza and the Bismillah Sweets से आज हम समोसे लेंगे. So today it's kind of a pizza and samosa kind of day, so let's go. अंदर बहुत सिर्फ टेक आउट है. इट्स वेरी कंजस्टेड, इट्स वेरी लॉन्ग लाइनअप, तो अंदर शूट नहीं करेंगे. सो इसलिए आज मैं बाहर से ही आपको दिखाऊंगा और फिर घर जाके ट्राई करेंगे. कराची पिज़्ज़ा इज़ लाइक काइंड ऑफ अ फ्यूजन लाइक बिटवीन देसी एंड काइंड ऑफ अ इटालियन पिज़्ज़ा. और यहाँ से मेरा जो फेवरेट फ्लेवर है वो बिहारी कबाब पिज़्ज़ा, एंड द सॉस एवरीथिंग इज़ सो अमेजिंग. और समोसा legit samosas like beef and आलू. थोड़ा सा लेट हो गए हैं तो देखते हैं हमें मिलता है या नहीं मिलता. सो स्टे ट्यून फॉर टुडे. और वेदर आप देख रहे हैं, ज़्यादा देर बाहर नहीं रह सकते, तो लेट्स गेट द फूड एंड देन गेट बैक होम एंड ट्राई एंड गेट द रिव्यू. As you guys can see, it's a long lineup now for samosa. From Karachi Pizza, I got a stuffed naan too. We haven't tried that before, so this is the first time. And from Bismillah Sweets, we got chicken samosa and veggie samosa, and we also got the Gajar ka Halwa. It was not the plan, but it was looking so good that I can't resist. और ये दोनों वीडियो साथ करने की वजह सिर्फ यही है कि these both places are next to each other, as you can see, like so right next to each other. So whenever we come here, we always trying to get like sham ka nashta, pizza, and like so this is the spot. अब घर चलते हैं जल्दी से, वेदर ख़राब होता जा रहा है और ट्राई करते हैं इन चीज़ों को. हाय गाइस, सो हम वापस घर आ चुके हैं और अब वेदर थोड़ा ख़राब था, थोड़ा सा टाइम लगा, पर वी मेड इट बैक. सो नाउ हियर वी हैव आवर स्टफ नान, आवर पिज़्ज़ा, आवर समोसास, एंड वी ऑल्सो ऑब्वियसली विंटर बहुत है तो लाइक सीजनल गाजर का हलवा आया हुआ है, तो वी गोना ट्राई दैट आउट एंड आई एम गोना गिव यू रिव्यू. बहुत ज़्यादा रश था, लाइनअप बहुत लंबा होता है हमेशा यहाँ पे एवरी टाइम जब भी, क्योंकि मेरा वीकेंड में ही आना होता है. फ्राइडे सैटरडे संडे में जब भी आया हूँ तो बिस्मिल्लाह स्वीट्स के बाहर हमेशा लाइनअप होता है. एंड एज मैंने बताया कि राइट नेक्स्ट टू इज़ कराची पिज़्ज़ा, वन ऑफ द अमेजिंग पिज़्ज़ा. हम लोग फैमिली में अभी ये इतना हिट हुआ हुआ है, वी आर जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट कि ये क्या सॉस यूज़ कर रहा है, बिकॉज ही इज़ नॉट यूजिंग पिज़्ज़ा सॉस, ही इज़ डेफिनेटली यूजिंग पिज़्ज़ा सॉस, पर जो बिहारी चस्का इसका जो फ्लेवर है जो हम लोग हमेशा लेते हैं उसके डो के अंदर और सॉस के अंदर, एंड देन यू गॉट सम बिहारी कबाब चंक्स उसके ऊपर. अमेजिंग पिज़्ज़ा. तो बोलते हुए मेरे मुंह में पानी आ रहा है, सो लाइक लेट्स हिट इट ऑन. वन इज़ चिकन एंड वन इज़ वेजी.
तो आई डोंट नो, लेट्स टेक अ बाइट कि कौन सा पहले हमारे हाथ में आया है. मुझे इसके दोनों पसंद हैं. सो वाइफ लाइक मोर kind of veggie. I like the meat one, as you can tell. तो let's try. इसके साथ इनकी ये दो चटनी आती हैं. I usually don't like it with the chutney. It's very sweet, but people love their chutney. And एक बाइट मैं चटनी के साथ भी लूँगा, पर let's try. Let's see which one. So as you can see the samosas का flavor. Look at this. It's like reminded me like of Karachi, Pakistan. जो हमारे समोसे होते हैं. That's why like it's very hard to get that kind of a samosa. Still 100, not 100%, but very very close. So like look at this, the texture and the puff pastry like इतनी crispy होती है, like it's exactly like that. It's not like, it's legit samosa. So let's take a bite. This is the aloo one. This is piping hot. बिकॉज इसी के लिए हमें वेट करना पड़ा था एक्स्ट्रा, बिकॉज दे वर मेकिंग मिनिमम, देर वर लाइक 40 समोसास, 40, 30, 50 का ऑर्डर मिनिमम जाता है यहाँ से. तो जब भी हमें थोड़ा वेट करने लगा, ये देखें फिलिंग इसकी आलू की. यू कैन सी लाइक दिस हरी मिर्च, लाइक साबुत मिर्च एंड देन आलू, एंड दे हैव नॉट स्किम्ड ऑन द फिलिंग. रियली गुड. लेट्स टेक अनदर बाइट. You can see I'm breaking it down for you guys. You can see the masalas and you can feel it that the taste is so good. The next one I'm gonna take it with is with the chutney. As I told, like my wife loves यहाँ की chutney. मुझे इतनी नहीं पसंद, on the sweeter side. It's a kind of red chutney. Let me dip it for you guys. It's not a kind of ketchup or nothing. It's just like a red, I don't know, aloo bukhara, I don't know, but it's like sweet chutney though. And people really like its chutney, really. Yeah, look at this. Not bad. आज अच्छी लग रही है. This was the aloo one. So definitely next one is the chicken one. As you can see, बहुत crisp है pastry, बहुत ज़्यादा crispy समोसा है. और इनका गोश्त का मसाला भी बहुत सटल होता है. So अब इसका बाइट लेते हैं. Okay. चिकन की फिलिंग देखें, and it's very cheap, 0.70 for chicken and 50 cents for veggie. The whole, like I got 4 samosas, 4 veggie, 4 chicken and half a pound gajar ka halwa, and it was only 11 something. So it's still like something is still cheap. They have not raised the prices. Look at how the Qeema is in chicken ka. You can see there's like a bit of zira, a bit of like Qeema and like some, and it's really really good. Let's give it. Amazing. आज चटनी बहुत अच्छी लग रही है किसी वजह से, पर अमेजिंग. लाइक मैं आपको बता नहीं सकता. देयर इज ऑलवेज लाइक 8 to 10 people आउटसाइड, लाइन अप हमेशा. नमक पारे, मिठाई, एवरीथिंग इज ऑन पॉइंट. हलवा, लेट्स ट्राई इट. एज यू गाइस कैन सी, लेजिट जैसा हमें वहाँ मिलता है. 2 बड़े बड़े गरम ट्रेज में, लाइक इट्स हल्की आंच पे वहाँ पे बन रहा था. एंड आई कुडंट, लाइक it was really tempting, so I got a half pound and I want to try like how it is. So let's take it in. Obviously खोआ texture बहुत मुलायम जैसा आपको मिलता है. Like look at this, really good. Like it's so गरम और बिल्कुल कैरेट का. और मुझे हमेशा से लाइक घर का गाजर का हलवा नहीं पसंद आया, जो भी हम घर पे करते हैं. There's some people who love like, पर बाहर वाले they do it something different. I don't know खोआ क्या चीज़ डिफरेंट करते हैं, but oh my god. I wish I could have explained you exactly चल क्या रहा है. पर वही खोआ मुलायम exactly जो आपको बड़ी से एनी बड़ी पाकिस्तान में मिठाई की शॉप पे जो ओन करते हैं, exactly इनका हलवाई, इनका कुक जानता है कि वो क्या कर रहा है. Like look at this, so good.
so soft, थोड़े से पिस्ता आ रहे हैं. Oh my god, it's so good. So now, moving on to our next one. So let's give it a try first to our naan, the stuffed naan. It was recommended by employees, the girl who was working on the cash, and she said there was two kind of naan. There was one was Qeema and one was Bihari. So she said like go with the Bihari, that's our famous one. And it's kind of like not exactly naan slash like naan slash. There are other brands also in Mississauga which do like naan and like the fillings in them. But look at this. Look at this guy. So yeah, like we went with her recommendation. Uski recommendation ke saath hum gaye. Obviously, this is a white sauce which I get with the pizza always, and this is, I guess, raita which they give it with the naan. So this is the texture of naan. It's very thin bread, flat bread kind of, and then the paste to me felt like, let's see if we can open it. Look at this. It's all Bihari kebab in it with the sauce. It's mostly like a strips and mashed. So look at this. So पहले हम इसको try करेंगे without the dip, and let's see. Oh, so good. The Bihari kebab masala is not as good and it's kicking जैसे जो इनके पिज़्ज़ा पे होता है, पर trust me, the filling, the bite is so good. Like जो bake हुआ हुआ है नान, you want, आपको और दिल चाहेगा कि आप खाते रहें. Just a good time. Oh, look at this bad boy. Look at this. Look at this bad boy. Look at the Bihari kebab chunks on it. Look at this. There's always like we always get more. We are two people and it's a lot for two people, and we eat it in the breakfast. It's so much good next day. Agle din naashte mein. But look at this chunk. You literally feel like they're doing something with the dough, and it's not like a thin and a like thick crust, but it's like something in the middle. But whatever they're doing, it's magic, and I can vouch for it. So let me just dig in. Let's take a slice. Oh, look at this. Oh, look at this. There's a legit Bihari kebab chunks in the middle, jalapenos, and look, it's on the side like a. Look at the width. Best pizza, like best desi pizza right now. Let's give it a go. Like always, the dough is so soft in the middle, crispier on the outside, and then look at the Bihari kebab chunk. There's some kick of flavor in the dough afterwards. It's so soft. The dough is so soft, and like the pizza. Look at this. Oh. Legit. The dough is so soft and good. Like it's hard because this was like good, like 30 minutes drive from my house. I pick it up, I bring it back, and it's still like even next day I tell you like it's the best pizza. I'll never eat this one with the sauce, or just to show you guys who are interested. I really don't even know what sauce do they have. Definitely something garlicky, garlic mayo kind of sauce. Let me dip it for you. Not bad. Oh. It's a garlic mayo sauce. And the dip. The kebab, masala on the kebabs is so on point. It's super good. Best desi pizza right now. इनके पास भी line up orders like this took like I've ordered, and this took like 25 minutes because they had a like huge backup on Friday, Saturday, Sunday.
जितनी जगह बिजी थी, हाइप था, आप जाएंगे आपको पता चल जाएगा हाउ गुड इट इज़. सो गाइज, I'm just gonna go finish all of this with the family and see you guys in my next video. But thank you for जो अभी तक आप लोगों ने प्यार दिखाया है. Like people are liking it, commenting it and telling us a little bit. But इसी तरह देखते रहें, जुड़े रहें साथ. Like I'm gonna show you more stuff. What is it? Trips भी होंगे future में, आगे के भी plans होंगे, different cities भी try होंगी, and we're gonna try everything because like we like to eat outside. You can tell. हम लोग को एक्सप्लोर करते हैं, हम लोग हर चीज़ ट्राई करते हैं. आई जस्ट वांटेड टू शो विद यू गाइज, शेयर इट विद यू गाइज. तो फिर लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर प्लीज़, लाइक कमेंट एंड टेल मी के व्हाट यू वांट टू सी नेक्स्ट बिकॉज देयर इज़ सो मच टू शो यू स्टिल. एंड नेक्स्ट वीडियो तक के लिए खुदाफिज. एंड Make me a safe house. Shake it up, shake it up. She got her hands on her knees and she bringing the cake out. Smoke it up, smoke it up.